very few universities who accepted to meet with the students and discuss these demands. पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हमेशा इस तरह नहीं रहे जिस टाइम जो सिचुएशन आज है. There were a lot of rallies and protests almost everywhere in all the cities, outside, in the streets. स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर नहीं होगी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं खुलेगी तो इस मुल्क में जमहूरियत का कोई फीचर नहीं है. क्योंकि आपके पास तरीन्स आएंगे, आपके पास शरीफ्स आएंगे, आपके पास जरदारीज और भुट्टोज आएंगे. Do you think it is because the strong Israeli lobby in the US? पूरा कल्चर है हमारा जो एंटी डेमोक्रेटिक है. तो उस सब में आप किस तरह से तवक्को करते हैं कि जहाँ पर इतनी कमजोर हमारी मईशत हो, इतनी कमजोर जमहूरियत की ट्रेडिशन हो, खराब किस्म की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, वहाँ पर उस सारे माहौल में हम किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स में आपको वो स्पार्क नजर आए जो कि आना चाहिए. Israel is causing the genocide. Some of the universities don't care. Only they care about money and funding. आपको पता है कि मूवमेंट जो है वो कभी बॉर्डर नहीं देखती. अब हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के जो साथी पढ़ने के लिए वहाँ गए थे वो उन तमाम तर यूनिवर्सिटीज में एक्टिव हैं. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे. इस वक्त अमेरिका की मुख्तलिफ जामियात में तुलबा फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बड़ा हार्श रहा है. अब तक हजारों की तादाद में तुलबा को गिरफ्तार किया जा चुका है और अगर आप अमेरिका में इसराइल के ऊपर तनकीद करते हैं तो आपके ऊपर एंटी सेमिटिज्म के चार्जेस लगाए जाएंगे. आज इस प्रोग्राम में हम जो इस वक्त प्रोटेस्ट जारी है उस हवाले से भी बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितने तुलबा को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट एक्टिविज्म के हवाले से भी बात करेंगे. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है शेख इमाम ताहा हसानी ने, जो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है और इसके साथ साथ आप डायरेक्टर है इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो के. शेख अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thank you so much for your time. Sheikh, how do you see the ongoing on-campus pro-Palestinian protest in the US? How and when these protests have been started? So, before the encampments and the protests at universities, American universities, there were a lot of rallies and protests almost everywhere in all the cities, outside, in the streets. However, when the Columbia University in New York, about like 3 weeks ago, they started their encampment over there, then many other universities and college campuses around the nation, in Canada, now in Europe, and many other places in the world, the students started having encampments, like camps with tents, and it started spreading all over the United States. So this is how it started. It started first in the street, and then it went to the college campuses. So how has been the response of the US government so far? As we have seen in the media, hundreds of protesters are being arrested. Can you please share with us the actual data? How many protesters are being arrested and under what charges they are being tried? The latest statistics or number says that 1,200 students were arrested so far. But many of them were released, like here in San Diego, at the University of California, San Diego, last Monday, they arrested about 60 students, but they were all released the same day. After they took them to the county jail and they booked them, they released them the same day. You see, except very few students around the nation. Maybe those who had some charges before, they were kept for like few days, but most of them they were released, and you know they were charged with misdemeanor because they were not allowed, for example, to put a tent on a college campus. So they broke or they violated the rules of the university. They did not break the law. They did not do anything wrong. But according to the rules of the university, the students, they violated the rules by putting tents inside the college campus, and they are not allowed. Okay, Sheikh, can you please also share with our audience that what is the current situation in different universities of US and what are the demands of the protesters? The demands are almost common and similar all over the nation. So number one,
to have their colleges and the universities to divest from Israel, not to have any partnership with any Israeli universities. Number two, to have their universities release a statement calling for ceasefire, just to join other agencies, other organizations to call for a ceasefire. Number three, part of the demands also, there are some universities who invest with the weapons, with the Department of Defense. So the students ask their universities not to invest in military and not to help making or manufacturing weapons that are used in Gaza, are used to kill the innocent people. Do you think the universities will accept the demands and they will cut ties with the organizations which benefit from the Israel's war? Very few universities so far, very few universities who accepted to meet with the students and discuss these demands. Some of the universities, like University of California, Riverside here, they said, and another university in Washington State, they said that they are going to have these demands for a vote. So if the student body and the associated students organization, they vote on this, then the university will do it. But the vast majority of the universities did not accept these demands, which means that some of these universities, they really don't care about their students. They care about money, they care about funding, they care about business, doing business, even if they know that the business they are doing with Israel is causing the genocide. Some of the universities don't care. Only they care about money and funding. Sheikh, keeping in mind your comment about the university's attitude toward the protesters, a question popped up in my mind. The US considered itself as the most civilized nation, considered itself as the champion of democracy, human rights, freedom of speech, freedom of assembly. But why such a hard treatment towards the pro-Palestinian protest and anti-war protesters? So I have said a few days ago that the United States or America is the land of the free and freedom, except when it comes to Palestine. This is an exception. And this is an indication of the power of the Zionist organizations right here in the United States. So as you may know, AIPAC, their role is to buy the consciousness of the politicians and elected officials, all the way from the White House to the mayor and the city council members. You cannot imagine, Brother Asadullah, when we, last week I was in Washington, D.C. We had the 2 days of Muslim advocacy in the Congress. And we met with a lot of officers in the Congress. You can discuss with them whatever you want, and they feel very comfortable. Once you mention the word of Gaza and Palestine, once you tell them that, okay, let's talk about what you can do for the oppressed people in Gaza and Palestine, it's a very uncomfortable conversation, very uncomfortable. They are scared to death because of the Zionist lobby funding them and pressuring them not to take any action against Israel. This is the reality, unfortunately. Okay, so do you think it is because of the strong Israeli lobby in the US? Yes, this is the reality. This is the reality. I mean, just go look at what AIPAC is doing in terms of their pressure on the elected officials, all the way from the federal level to the city and local level. It's something unbelievable. We used to know, we used to hear about the power of the Zionist lobby, but at this time, it's obvious. It's obvious. Whether the politicians or the mainstream media, they are all under
the pressure of the Zionist lobby. So even, for example, when you talk to the politicians, they cannot and they don't want to use the word, for example, genocide. They don't. They call it a conflict. They call it Israel-Hamas war. But when it comes to using the term genocide, they cannot, because they know that if they use it, there will be consequences. Okay, Sheikh, how do you see the recent law passed by the US government that if you criticize the Israel, you commit anti-Semitism? How do you see this? So this is a big issue now in the United States. Last week, last Wednesday, the Congress, the United States Congress, passed a law saying that anti-Zionism equal anti-Semitism. And this is very dangerous. This is a big assault on the freedom of speech, meaning that in the United States, you can criticize any government you want, including the US government. You can say whatever you want on Biden, on the US government. But once you start criticizing the Israeli government or the Zionists, you are in trouble. So now there is a big push by a lot of organizations, including Jewish Voice for Peace, pushing that anti-Zionist is not anti-Semitic. Criticizing the state of Israel and what Israel is doing should never be considered as anti-Semitic. Basically, what they are saying that this bill at the Congress, considering anti-Zionist as anti-Semitic, actually in itself is anti-Semitic, meaning that it is considering all the Jews as Zionists, and which is not the case. This is not right. There are so many Jewish in the United States who reject Zionism, and we work with them. They are part of our coalitions, and they work very hard, to pressure the U.S. government to stop funding the genocide in Gaza. When I was in the Congress, Brother Asadullah, who are the people who, on a daily basis, walking in the streets of the Congress, knocking on the doors of the congressmen and women, and pressuring them to call for the ceasefire? These are the Jewish Voice for Peace, every single day. So we have been working with them, and their voice is very strong. Do you think that the American unwavering support for the Israeli brutalities will earn it more hatred across the globe? The question that Americans ask all the time: why the world hates us? Why? I mean, and I tell them, really, you don't know why the world hates us? Because we are standing on the wrong side of history. Because we are supporting the genocide. Because we are supporting, everything wrong, all the injustices going on in the world. And we can go back to the war, quote unquote, the war on terror. What's the result of the war on terror? How many millions of people killed by the United States Army in Iran, in Afghanistan, in Iraq, in Yemen, in many places in the world? You see? So when Americans ask why they hate us, now they understand why a lot of people in the world don't like the United States of America. It's not about, hating the people of America, hating the government, the policies, especially the foreign policy of the United States of America. Okay, Sheikh, my last question from you is that how do you see that these protests are going to impact the public opinion and polity in the US? Public opinion in the United States is shifting big time. It's shifting. And this is what's making the Zionists frustrated, because they see that they are losing the ground. They see that they are losing the people, especially the young people. In the United States, young people do not watch the mainstream media. They don't care about CNN and Fox News and ABC and CBS. They get their information from the social media. That's why the US government wants to ban TikTok in the United States.
TikTok is bringing a lot of information to the young people, and that's why the Israeli government decided to ban Al Jazeera channel over there. So these are the two sources from where the people, especially the young people in the United States, are getting their information. They're not getting it from the mainstream media anymore. So the social media, people on the ground in Gaza and Palestine, sharing the videos, sharing the pictures, sharing the news. This is from where people now are getting their information. And this is resulting to a big shift when it comes to the public opinion in the United States when it comes to the issue of Palestine and Gaza. मेरे साथ कैलिफोर्निया से मौजूद थे शेख ताहा हसानी, जिन्होंने यूएस में जो इस वक्त प्रोटेस्ट जारी है उस हवाले से बात की और यूएस गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है उस पर भी बात की। इन प्रोटेस्ट के स्टूडेंट एक्टिविज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, पाकिस्तान के तुलबा इससे क्या सीख सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हैदर भट्ट। हैदर भट्ट खुद एक लॉयर भी है और पाकिस्तान की स्टूडेंट एक्टिविज्म में इनका बड़ा अहम रोल रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा अहम रोल रहा है और पाकिस्तान में ये स्टूडेंट एक्टिविज्म और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को प्रमोट भी करते हैं। हैदर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑन कैंपस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, हम तो ये समझ रहे थे कि एक हद तक ये तासुर दिया जाता था कि जो अमेरिकी शहरी हैं वो भी जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म का एजेंडा है और जो अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जंगों को ख़ास तौर पे फंड करता है और फ्यूल करता है, और ख़ास तौर पे जब इजराइल की बात आती है तो ये तासुर दिया जाता था कि जिस तरह से अमेरिकी शहरी भी इसमें है। लेकिन हमें ये देखने को मिला कि जो पूरा इंटेलिजेंसिया है अमेरिका का, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, उसने इस जो बाइडन की पॉलिसी है और जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो कि दहाइयों से इसी तरह की पॉलिसी फॉलो करता आ रहा है, उसको उन्होंने रद्द किया और उन्होंने आवाज़ उठाई। अब ये बड़ा एक कंट्रास्ट है इस सारी चीज़ में कि अमेरिका का आप ये देखें कि यहाँ तक सिचुएशन पहुँच गई है कि वो जमहूरियत जिसको पूरी दुनिया में कहता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में हम प्रोटेक्ट करने का दावा करता है, वही जमहूरियत जब अपने लोगों ने प्रोटेक्ट करने की बात की है तो किसी को एंटी सेमेटिक कहा गया, किसी को एंटी ज्यू कहा गया, किसी को कहा गया कि ये मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है। तो हमें ये भी इस सब में नज़र आया कि जो अमेरिकन जमहूरियत का और लिबरल ह्यूमन राइट्स का करता फिरता है अमेरिका पूरी दुनिया में, उसने अपने शहरियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ किया है, वो इंतहाई कंडेमनेबल और शेमफुल है। और हम ये समझते हैं कि ये असल में वो शऊर है, वो कॉन्शियस है जो कि अमेरिकन सिटीजन की कॉन्शियसनेस है, जो इनकलाबी है, जो एंटी वॉर है, जो कहती है जो एंटी इंपीरियलिज्म है। तो हम इसका खैर मकदम करते हैं और इसने पूरी दुनिया में एक तरह से स्टूडेंट्स को और एक प्रो-पैलेस्टीनियन मूवमेंट जो दब गई थी और कमज़ोर पड़ रही थी उसको एक बार नई जान बख्शी है। अच्छा हैदर, यूएस में जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस यूएस के स्टूडेंट एक्टिविज्म से पाकिस्तान या दीगर ममालिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? देखें, यहाँ पर तो जहाँ तक पाकिस्तान की अगर ख़ास तौर पे अगर बात करें या थोड़ा सा इंडिया का मैंने फॉलो किया है, तो पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर जो यूएस के अंदर स्टूडेंट्स अब बहुत बड़ी तादाद आपको पाकिस्तानी अमेरिकन स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए गए हैं। अब हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के जो साथी पढ़ने के लिए वहाँ गए थे, वो उन तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिव हैं। अब उनको देख के आपको पता है कि मूवमेंट जो है वो कभी बॉर्डर नहीं देखती, मूवमेंट जो है वो फासले बड़ी जल्दी से तय करती है जो मूवमेंट का पैगाम होता है। तो चूँकि ये ग्लोबल इशू है और चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस जो जेनोसाइड हो रहा है पैलेस्टीनियन का उसके ऊपर है, तो हमारी अपनी जो तंजीम के साथी हैं उन्होंने उस सारी मूवमेंट से हिम्मत पकड़ी, इनकरेज हुए और उन्होंने जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो आने पिछले कुछ रोज़ में जितनी भी आप कह रहे हैं एजिटेशन थोड़ी ज़्यादा जो इस इशू के ऊपर हुई, जिस तरह से जर्मन एम्बेसडर को एजे कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे साथियों ने, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के साथियों ने रोका, उसको कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं कि आप अपने शहरियों को उनके जो जमहूरी हकूक़ हैं उनको आप मार रहे हैं जब वो पैलेस्टीनियन के हक़ में बोलते हैं।
और यहाँ पर आप हमें लेक्चर देने आए हैं ह्यूमन राइट्स का। तो वो सारी एपिसोड आपके सामने है कि उनके साथ क्या किया गया, और उसके बाद उन्होंने यूएस कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट भी किया, और दीगर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के साथ ही मौजूद हैं, वहाँ पर वो जितने भी अमेरिकन फंडेड प्रोग्राम्स हैं या अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो उनको अटैक कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। और ये सारा इस वजह से हुआ क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट है वो पूरी दुनिया में ये मूवमेंट जो है इनकरेज कर रही है स्टूडेंट्स को। इसी तरह से इंडिया में भी देखने को मिला, जेएनयू और दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर प्रोग्रेसिव बैठे हुए हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पे, चूँकि इंडियन अवाम और जो इंडिया की स्टेट है वो चूँकि इसराइल के साथ खड़ी है, तो वो एक इंटायरली डिफरेंट तरीके से उस सारे इशू को देखते हैं वहाँ। लेकिन वहाँ पर भी जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में अपना आवाज़ भी बुलंद की। अच्छा हैदर, अब चूंकि आप लोग स्टूडेंट एक्टिविज्म को प्रमोट भी करते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी प्रमोट करते हैं, बात भी करते हैं कि पाकिस्तान में इसके ऊपर जो पाबंदी है वो हटनी चाहिए, आप पाकिस्तान में स्टूडेंट एक्टिविज्म का फ्यूचर कैसे देखते हैं? और ज़रा ये भी बताइएगा कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो अभी भी वो स्पार्क हमें स्टूडेंट्स में नज़र नहीं आता कि वो इस सतह की स्टूडेंट एक्टिविज्म कर सके, क्या वजह है और किस तरह आप इसको देखते हैं? जी देखिए, आप दो सवाल हैं आपके। पहला जो सवाल है वो है इस पॉलिटिक्स के फ्यूचर का। देखें, अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये कैटेगोरिकली मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर नहीं होगी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं खुलेगी, तो इस मुल्क में जमहूरियत का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि आपके पास तरीन्स आएंगे, आपके पास शरीफ्स आएंगे, आपके पास जरदारी और भुट्टोज आएंगे, ठीक है, आपके पास जो एक पीर मुरीद सैयद आएंगे, मतलब वो सारी जो कॉलोनियल एलीट है या वो ख़ानदान जिनका इस मुल्क के ऊपर कब्जा है, या फिर क्या कि जो फौजी जर्नैल हैं, जो एजेंसीज हैं, वो प्लांट करेंगे लोगों को, किसी मुल्ला को बुलाएंगे, किसी बिजनेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। ये एक क्लियर चीज़ है। अगर और अब इसकी तरफ आ जाते हैं कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। देखें, जो जद्दोजहद इस वक्त स्टूडेंट्स कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, चाहे थोड़ी तादाद में कर रहे हैं, चाहे उतनी बड़ी तादाद स्टूडेंट एक्टिविज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिशें जो हैं वो पिछले कुछ अरसों से तेज़ हुई हैं इस इशू को लेकर। इसमें राइट विंग की जो स्टूडेंट जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका किरदार भी है, और प्रोग्रेसिव्स का ख़ास तौर पे किरदार है कि उन्होंने इस डिबेट को इग्नाइट किया दोबारा से, और इसको सीरियसली कंसीडर भी किया जा रहा है जो जमहूरी हल्के हैं। मगर इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट इस मुल्क के अंदर है वो डीप स्टेट है, और ख़ास तौर पे ये जो ख़ानदान जिनका कब्जा है सियासत के ऊपर, ये बैठे हैं। लिहाजा ये जदोजहद चलती रहेगी, और इस जदोजहद का कामयाब होना मुल्क की जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नागुज़ीर अमल है। अब आपका जो दूसरा सवाल, जी आपका जो अब दूसरा इसी का पार्ट था कि स्टूडेंट्स के अंदर वो स्पार्क नज़र नहीं आता। देखें, आप ये सोचें कि स्टूडेंट्स को उनके डेमोक्रेटिक राइट से डिप्राइव कितनी देर से किया गया है। जमहूरियत कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप कोई अंदर ले के आपके अंदर है कोई चीज़, देयर इज़ समथिंग योर सेल्फ जो कि आप जिसका इजहार नहीं कर पा रहे। जमहूरियत एक प्रैक्टिस का नाम है, एक अमल का नाम है, एक माहौल का नाम है। अब 1984 से अगर स्टूडेंट यूनियंस बैन है, आपके स्कूल में स्टूडेंट यूनियन नहीं, आपके घर के अंदर कोई जमहूरी उस तरह का माहौल नहीं, वालिदैन ने कहना है आपने ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है, अगर आपको कॉलेज के अंदर कोई किसी किस्म का जमहूरियत का आपको रोल नहीं दिया जाता, कोई इलेक्शंस का रोल नहीं दिया जाता, यूनिवर्सिटी में जब एडल्ट बन जाते हैं और आप सिटीजन बन जाते हैं, पाकिस्तान के 18 साल के शहरी हो जाते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, उस वक्त भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी के मामला को देखने के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अलाउ नहीं किया जाता। फिर आप वर्क स्पेस पे जाते हैं, वहाँ पर कोई यूनियन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखें कि जो पूरा कल्चर है हमारा, जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। तो उस सब में आप किस तरह से तवक्को करते हैं कि जहाँ पर इतनी कमज़ोर हमारी मईशत हो, इतनी कमज़ोर जमहूरियत की ट्रेडिशन हो, और लोगों को नफ्सा नफ्सी का आलम हो, और इतनी आप ख़राब किस्म की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, वहाँ पर उस सारे माहौल में हम किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स में आपको वो स्पार्क नज़र आए जो कि आना चाहिए, जो दीगर ममालिक हैं जहाँ पर स्टूडेंट यूनियन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वहाँ पर आपको नज़र आए। तो मेरे ख्याल में ये इसके पीछे आपको महरक़ात जानने की ज़रूरत है।
अच्छा हैदर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे चूंकि स्ट्रक्चर रिस्ट्रेंट्स है जिसकी वजह से वो स्पार्क हमें नजर नहीं आता। आप चूंकि बड़े एक्टिव हैं, ये बताइएगा कि और आपको ये भी पता है कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान में, किस तरह पाकिस्तान के तुलबा को एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट किया जा सकता है, किस तरह तुलबा एक दूसरे की आवाज़ों को एम्पलीफाई कर सकते हैं? ये देखें, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो करने वाली है सवाल के जवाब से पहले, कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हमेशा इस तरह नहीं रहे जिस टाइम जो सिचुएशन आज है। स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट मूवमेंट का एक बहुत रोशन माजी रहा है। डिक्टेटर को गिराया था वो 1968 की मूवमेंट करें, आप MID की तहरीक की बात करें, आप मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक चलने वाली बात करें, आप उकाड़ा मिलिट्री फार्म्स की बात करें, आप PTM की बात करें, आप स्टूडेंट मूवमेंट की बात करें, आप और जितनी भी मुल्क के अंदर चलने वाली मूवमेंट्स हैं उनमें जो कलीदी किरदार है, इवन बलोचों की आप जो स्ट्रगल रिसेंटली हम देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं, उस सब तहरीकों के अंदर स्टूडेंट्स का कलीदी किरदार होता है। बल्कि स्टूडेंट्स उस मूवमेंट के इंजन का रोल प्ले करते हैं, इंजन की सूरत होते हैं, उस पूरी मूवमेंट को चलाते हैं, लेके चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो स्पार्क जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म है या उसका कोई स्टूडेंट्स का इस तरह से रोल नहीं है। तो ये हमें नज़र आता है। अब आपका जो सवाल था उसकी तरफ आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा काइंडली रिपीट कीजिएगा, मैं भूल गया हूँ सवाल आपका। सवाल ये था कि पाकिस्तान के जो तुलबा है वो किस तरह एक दूसरे की आवाज़ों को एम्पलीफाई कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखें, जो रियासत की जानिब से ख़ास तौर पे फासला है बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के और पंजाब के स्टूडेंट्स के दरमियान, और इसी तरह जो दूसरी कौमियतें यहाँ पर हमारी बसती हैं, उस फासले को एक ख़ास अंदाज से प्रोपगेट किया गया और इनकलकेट किया गया है। मैं समझता हूँ एक तो उसके बड़े सॉलिड रीजंस भी हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा ख़ास तौर पर तबका है उसके अंदर नफ़रत को इस तरह से उबारा गया ताकि ये करीब ना आ सकें, एक दूसरे के मसाइल ना जान सकें और एक दूसरे के लिए आवाज़ ना उठा सकें। अब माजी करीब के अंदर ऐसी अटैम्प्ट हुई हैं जिसके नतीजे में सारे स्टूडेंट्स ग्रुप्स जो हैं वो आपस में बैठे हैं। मिसाल के तौर पर 2019 की स्टूडेंट मूवमेंट का आपको मालूम होगा, उसमें जितने भी कम अज़ कम प्रोग्रेसिव और नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था जिसका नाम स्टूडेंट एक्शन कमेटी था, जिसने मुल्क के 56 शहरों के अंदर जो तलबा के तमाम तर तलबा दीगर सूबों के, दीगर कौमियतों के, अंडर प्रिविलेज जो बैकग्राउंड्स हैं वहाँ से तमाम स्टूडेंट्स ने ऐसे मुतालबात बनाए थे और उसके ऊपर एजिटेशन की थी, अपनी रैलीज निकाली थी, आवाज़ बुलंद की थी पूरे मुल्क के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि सारे तलबा को, वो चाहे किसी पार्टी का स्टूडेंट विंग है या किसी पार्टी का स्टूडेंट विंग नहीं है, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स, तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को ये इस वक्त की जो मुल्क की सूरत हाल है इसके ऊपर और जो ग्लोबल ख़ास तौर पे पैलेस्टाइन के हवाले से जो जेनोसाइड उनका चल रहा है, इसराइल जो जेनोसाइड कमिट कर रहा है, इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और उसके ऊपर एक मुश्तरका अपना एजेंडा पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जदोजहद की जाएगी जमहूरियत के लिए, स्टूडेंट राइट्स के लिए, और ग्लोबली किस तरह से इसराइल की जो बर्बरियत है उसको कंडेम किया जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह का पॉलिटिकल डिप्रेशन है और जिस तरह का पॉलिटिकल रिप्रेशन है, इस सब में स्टूडेंट्स अपना इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और एक हिस्टोरिकल रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए और इस वक्त जो वायलेशन हो रही हैं उसको कंडेम करने के लिए। अच्छा हैदर, तो क्या पाकिस्तान के जो तुलबा है वो स्टूडेंट प्रोग्रेसिव कलेक्टिव से ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो आने वाले दिनों में इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस बुला सकती है? बिल्कुल। अभी तो मैं तो चूँकि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव से ग्रेजुएट कर गए और मैं उनका उस तरह से फॉर्मर मेंबर हूँ। हमारी एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है कि हम हर साल 2 साल बाद इलेक्शंस करवाते हैं और नई कैबिनेट आती है, लेकिन बाहर क्या मैं आपको उनके बिहाफ पे ये ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव लेने से हमें कोई हर्ज ना होगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस तरह का इनिशिएटिव लें जिसमें तमाम तर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन जेन्युइन जो मुद्दे हैं इनके ऊपर इकट्ठा बटाएं और एक स्ट्रैटेजी बनाकर इस मुल्क के अंदर किसी न किसी किस्म की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया हैदर अपना वक्त देने के लिए।